लैपटॉप की स्क्रीन पे हम यहाँ पे एपी यूनी ऐप ओपन कर लेते हैं। जो हमारी एपी यूनी साइट है हम यहाँ से एपी यूनी साइट ओपन कर लेते हैं। तो आज हमने बात करनी थी रीटेल लेक्चर, जो कि हमारा 4th टास्क है स्पीकिंग में। तो हम चलते हैं रीटेल लेक्चर पे। रीटेल लेक्चर पे हम क्लिक करते ही हमारे पास काफी सारे टास्क आ जाएंगे। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। Facts you read, hear, or study become memories through a Airlines can make a lot of money by flying to the right. ये हमारे पास जो है स्पीकिंग स्टार्ट हो गई है। हम स्पीकिंग के मुताबिक चलेंगे। हमने सारी चीज़ें स्पीकिंग के मुताबिक फॉलो करनी है। ये स्पीकिंग चलेगी। हमने इसमें से कीवर्ड्स उठाने हैं। मीन्स कि आप 10 से 12 कीवर्ड आप उठा लें। आप उठा के उनको फॉलो करें। जो टेम्पलेट मैं आपको दूंगा या जो टेम्पलेट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, आपने उसी के मुताबिक उसी में आपने कीवर्ड पुट करना है। पुट करने के बाद आपने वो उसकी स्पीकिंग करनी है। इंशाल्लाह ताला आपके 7 to 8 बैंड्स आप इजीली उसमें हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Places. British Airways, for example, long ago cemented themselves as the leader on the London Heathrow to New York JFK route, and flying between these two airports now earns them over $1 billion per year. That's more than any airline makes on any other route in the world. Conversely, though, airlines can lose a lot of money by flying to the wrong places. American Airlines, for example, recently canceled their Chicago to Beijing flight as it was losing them tens of millions of dollars per year. Now, the fact that this route failed might be puzzling considering it flew between the world's 50th and the world's 7th largest city. Even more, they were flying the 787H Dreamliner, the smallest plane they could on this route. Nonetheless, it was truly a financial disaster. The airline said that, in terms of annual revenue, the route was $80 million away from their target. The truth is that deciding where to fly is a lot more complicated than pairing up the largest cities. It's an art that people spend their whole lives mastering, and the difference between an airline on time to the right places. British Airways, for example, long ago cemented themselves as the leader on the London Heathrow to New York JFK route, and flying between these two airports now earns them over $1 billion per year. That's more than any airline makes on any other route in the world. Conversely, though, airlines can lose a lot of money by flying to the wrong places. American Airlines, for example, recently canceled their Chicago to Beijing flight as it was losing them tens of millions of dollars per year. Now, the fact that this route failed might be puzzling considering it flew between the world's 50th and the world's 7th largest city. Even more, they were flying the 787H Dreamliner, the smallest plane they could on this route. Nonetheless, it was truly a financial disaster. The airline said that, in terms of annual revenue, the route was $80 million away from their target. The truth is that deciding where to fly is a lot more complicated than pairing up the largest cities. It's an art that people spend their whole lives mastering, and the difference between an airline that's good at route planning and one that's bad at it can be the difference between a profitable airline and a defunct one. The following lecture give information about the leadership. It is a very beautiful lecture. I like it very much. The speaker said about the airline and the lot of the money. Secondly, the speaker said about the wrong places and the million of dollars. At the last, the speaker said about the $80 million and the largest city. So I like it very much. It is a very beautiful lecture. तो गाइज यहाँ से हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारी प्रोसेसिंग चलेगी। मीन्स कि हमारा स्कोर चेक किया जाएगा कि कितना स्कोर आता है इस चीज़ में। तो हम यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक टू द स्कोर। तो हमारी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो द फॉलोइंग लेक्चर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लीडरशिप। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइज आप देख सकते हैं स्कोर हमारा कंटेंट 90/90। द फॉलोइंग लेक्चर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लीडरशिप। इट इज अ अगर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो 62, अगर फ्लुएंसी की बात की जाए तो 71।
तो ये हमारा अच्छा स्कोर है। आपने आज ये सारी चीज़ें लाइव देखी है। इंशाल्लाह जो हमारा टेम्पलेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आपने उसी को फॉलो करना है और उसी के मुताबिक करना है। इंशाल्लाह 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 आप 7 से 8 बैंड इजीली हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।